Minister of State for Industries, MSME, Energy and Home, Shri Divya Shankar Mishra, Development Commissioner Shri P.K. Jaina, CMD IOCL Shri S.M. Vaidya, CMD IDCO Shri Sanjay Singh, other senior officers from Government of Odisha, IOCL and Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India. I extend a very warm welcome to this August ceremony. As you are aware, today we have two important milestones to achieve. First, we would be signing a share subscription cum shareholders agreement between Indian Oil Corporation and IDCO for co-development of the Paradip Plastic Park. Secondly, we would also be signing a memorandum of understanding again between Indian Oil Corporation and IDCO for providing a special set of incentives to the units coming up in the Paradip Plastic Park. We believe that with both of these initiatives, the development of Paradip Plastic Park and the downstream polymer industry in Paradip and in Odisha would be expedited. With these words, I now invite Shri S.M. Vaidya, CMD IOCL, to kindly deliver his brief address. Esteemed guest of honor, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of State, Home and MOS Independent for Energy, Industries and MSME, Government of Odisha, Captain Divya Shankar Mishra ji, Secretary MOPNG, Shri Tarun Kapoor ji, Principal Secretary Industries, Department, Government of Odisha, Shri Hemant Sharma ji, Development Commissioner cum Additional Secretary, Shri Pradeep Kumar Jana ji, CMD Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation, IDCO, Shri Sanjay Kumar Singh ji, MD Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited, IPCOL, Shri Nitin Javle ji, my colleague on the board of Indian Oil, Shri G.K. Satish, senior officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, senior officials of Odisha Government and from Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation, my colleagues from Indian Oil, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. On behalf of Indian Oil Corporation, I take this opportunity to welcome all our distinguished guests who have taken time off from their busy schedule to join us at this MOU signing ceremony. It is indeed a momentous occasion as the share subscription cum shareholders agreement and memorandum of understanding will be signed today between Indian Oil and Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation, IDCO, for the development of the Paradip Plastic Park. Inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Purvodaya that envisages a prosperous Eastern India, Indian Oil has been keenly pursuing projects that are focused on Odisha's economic progress. This project is also a step in this direction. I must add that the remarkable industrial development that Odisha has witnessed in the last decade has increased the state's visibility at the national and international level. Paradip Plastic Park Limited is a special purpose vehicle to promote downstream plastic industries. It is being developed on 120 acres of land adjacent to Indian Oil's Paradip refinery. The total project cost for the development of Paradip Plastic Park is approximately rupees 107 crores. Given the low per capita polymer consumption in Odisha for about 2.5 kg compared to the national average of around 12 kg, there is a vast potential that can be leveraged through the Paradip Plastic Park. This park will aim to develop polypropylene-based downstream industries such as PP raffia for cement bags, geotextiles and FIBC, BOPP films for textile and packaging, PP injection molding for syringe and furniture applications, PP non-woven for hygiene and medical applications, and much more. Before I conclude, I would like to appreciate the assistance extended by IDCO to develop the Paradip Plastic Park. With these words, I once again welcome all our guests of honor and other invitees to this virtual event and wish this unique venture all success. Stay safe, stay healthy. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, Mr. Vaidya. I would now invite Shri Divya Shankar Mishra, Honorable Minister Industries, Energy, MSME and Home, to deliver his address. Sir, kindly unmute yourself. Honorable Minister, sir, please unmute yourself.
Honorable Chief Minister, Sir, Honorable Union Minister for Petroleum, Natural Gas and Steel, Principal Secretary Industries, CMD, IOCL, Mr. S.N. Vaidya and his team of officials. Today is a real proud moment for the state as a whole that a very ambitious MOU is going to be signed between IDCO and IOCL to set up a plastic park at Paradip. Under the leadership of our Chief Minister, Odisha is turning into an industrial hub center. Chemicals and petrochemicals are a focus sector for Odisha. Definitely, this plastic park is going to boost our key areas in our focus sector. Paradip is the largest port in the country in terms of cargo operations. Now, the new venture will add a new feather to the industrial hub at Paradip and will certainly escalate economic growth in our state. I feel happy to share that this plastic park with project cost of around 107 crore is a major and significant project out of the approved projects of Government of India. From the IDCO side, we have completed the process of providing basic facilities like approach road, interconnectivity, water supply, power supply, and all other allied services. The future seems to be bright in terms of investment as huge resources shall pour in for this plastic park. This will bring transformation in socio-economic development indicator of the region. I extend my deep gratitude to the Union Minister, Petroleum, Natural Gas and Steel for his encouraging step to go for this plastic park. I am thankful to our visionary Chief Minister for his keen interest to make Odisha a preferred destination for investment and to bring visible changes in industrial scenario. I am confident this will have its due contribution in the state's economy and create new vistas for job aspirants. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I would now invite CGM of IDCO, Shri Bhaktakavi Das, and ED of IOCL, Shri Dhananjay Srivastav, to first sign the share purchase agreement and then execute the MOU between the two organizations. Stop. Sir, having completed the signing of the two agreements, I would now invite Honorable Union Minister, Steel, Petroleum and Natural Gas to kindly deliver his address. नमस्कार ओडिशार सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महाशय आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा पेट्रोलियम विभाग सचिव आदरणीय तरुण कपूर महाशय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ओडिशा सरकार आदरणीय मंत्री श्री दिव्य शंकर मिश्र आदरणीय प्रदीप जेना श्री हेमंत शर्मा श्री संजय सिंह श्री कार्तिक पांड्यान अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण आज आम समस्त गोटे शुभ अवसर बहुत विलंबर हेला परे भी भारत सरकार कंपनी आईओसी आ ओडिशा सरकार कंपनी इडको भितरे पारादीप स्थित जॉइंट वेंचर प्लास्टिक पार्क गोटे फॉर्मल चुक्ति आज स्वाक्षर होउची पाखापाखि 106 कोटी टंका खर्चरे 120 एकर व्याप्ति रे 80 इंडस्ट्रियल यूनिट पाई जो प्लास्टिक पार्क आज गोटे फॉर्मल शेप नबा पाई जाउची याकु मु अनेक अनेक शुभेच्छा जणाउची एइतिरे आईओसी गोटे
पाखापाखि 40 कोटी टंका खर्च करिकी गोटे डेवलपमेंट सेंटर तैयारी करिछि जा द्वारा एठी जो बंधु माने कारखाना लगेवा पई आसीबे सेमानकु सबु प्रकार टेक्निकल नो हाउ दबार व्यवस्था एठी करा जाय परिबो। पारादीप सह आम ओडिशा रे अनेक अंचल रे खोर्धा बालेश्वर ब्रह्मपुर कटक ए अंचल रे भी प्लास्टिक आधारित शिल्प समूह सबु गढ़ी उठिछि। आईओसी को ए भितरे मु दायित्व देछि ओडिशा रे शिल्प लगेवा पई किछि इनसेंटिव मिलिबा दरकार। केवल प्लास्टिक पार्क रो सुविधा नुहे मूल कंचा माल को सस्ता रे मिलिले उद्यमी माने विशेष करके हमर ओडिया पिला माने ओडिया युवक माने उद्यमी हबार प्रयास करिवे। तेणु मेट्रिक टन पिछा 2000 टंका सस्ता रे नेशनल मार्केट रु आईओसी ओडिशा रे जो माने कारखाना लगेबे तांकु 2000 टंकार सस्तार कंचा माल दबो। ये निश्चित भावे आम राज्य पाई गोटे भल संभावना आनिमो। या द्वारा ओडिशा रे एठी आदरणीय वैद्यजी उल्लेख करुथिले जे आम देश रे ग्लोबल एवरेज जेतेबेले 35 केजी अछि प्लास्टिक यूज करिवार सेतेबेले आम देश रे एवरेज हला 12 केजी। ताकू जदि पूर्व भारत को नबा ताकू आछिबो एवरेज 5 केजी। आम राज्य ओडिशा रे जदि ताकू आम एवरेज हिसाब करछुन एटा 2.5 केजी। तार माने आम राज्य रे प्लास्टिक कंजम्पशन कथा कहले गोटे कथा डर भी आसे या द्वारा पर्यावरण रो कोन हबो। प्लास्टिक रो अर्थ नुहे केवल पैकेजिंग इंडस्ट्री। प्लास्टिक रो अर्थ हैला चौकी बासन घर रो अन्यान्य आवश्यकता उपकरण ए गुडिक प्लास्टिक रे आज सस्ता रे सुलभ रे आ दीर्घ समय पई बनी पारुची। गरीब लोकर लग्जरी ता घर रो ढांचा परिवर्तन रो प्लास्टिक गोटे बड़ कैटलिस्ट। आम राज्य रे आदरा गरीब लोक मानकु सम्मान रो जीवन मिलिबार संभावना ता सह आम राज्य रे शिल्पायन आम राज्य रे रोजगार आम राज्य रे राजस्व बढ़िबारे आज ये इनिशिएटिव गोटे भल उद्यम। माननीय मुख्यमंत्री सामने रे मु गोटे दुईटी अपेक्षा भी रखुची आज अवसर रे। माननीय मुख्यमंत्री महाशय ओडिशा रे आपण मानकर प्रचेष्टा रे अटल बिहारी वाजपेयी दूरदृष्टि कारणरू आपणकर सहयोग कारणरू ओडिशा रे पारादीप रिफाइनरी 15 मिलियन टन रो सबुठु अत्याधुनिक रिफाइनरी ए भितरे विगत 4 वर्ष हला कार्यक्रम होउछ। ता भितरे अनेक समय रे तार किछि प्रसंग थिला तार टैक्स रिकंस्ट्रक्शन रो किछि समय भितरे आपणको भितरे आउ मोर भितरे असहमति थिला। ताकू आज आम समस्ते आपोस विचार करिकी समाधान करिवार रास्ता बाहर करचंती। मु निजको सौभाग्यशाली मने करे कम से कम मोरी समय रे मोर द्वारा मु निमित्त मात्र हेली जे ओडिशार राजस्व को बढ़ेवा पाई जो बुझामण आगु हेतला सेतबेले मोर किछि भागीदारी नथिला किमा मोदी जींकर किछि भागीदारी नथिला। ता परे भी आपणक अपेक्षा रे ओडिशार विकास पाई जो टैक्स स्ट्रक्चर तत्कालीन सरकार आपणकटू करेगी नैथिला ताकू आमे पुनर्विचार करेलु ओडिशा पक्षरे करेलु। सेतेबेले गोटे कथा थिला ओडिशा सरकारकर अपेक्षा आउ गोटे रहुतला जे एठी ओडिशा रे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट विशेष करके नाफ्ता क्रैकर लागिले आउरी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री हबो। आयुषी वाला सेतेबेले मोर सामने रे कथा रखिथिले जे आमे पॉलीप्रोपिलीन बनौछु। प्रोपिलीन बनेमा जगह आमे पॉलीप्रोपिलीन बनौछु। एइतरे तार सुजोग ओडिशा नबा दरकार। आज आमे तार नबार गोटे पदक्षेप नेले। ये भितरे ओडिशा रे प्लास्टिक इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पाई स्टील इंडस्ट्री रो निडिल कोक पाई एबे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पाखापाखि 26,000 कोटी टंकार खर्च ओडिशा रे करूची। एबे पारादीप भद्रक ए अंचल रे 26,000 कोटी टंकार प्रकल्प एबे ता भितरु पॉलीप्रोपिलीन प्लांट 3100 कोटी टंकार समाप्त हो सारी। बाकी गुड़िक सब क्रियान्वयन होची। बाकी 22,000 कोटी टंकार प्रकल्प वर्षे 2 वर्ष भितर समाप्त भी हम। ये ओडिशार जो बड़ आकांक्षा आम समस्त अच्छी
जे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे आमे गोटे बड़ भूमिका निर्वाह करबा हम ओडिया लोक माने बाहर को जाउछन्ती टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करबा पई सूरत हो तिरुपुर हो ए अंचल रु बेसी लोक माने जाउछन्ती काम करबा पई से युवक युवती मानकू हम ओडिसा रे को भलिया भाबे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे गोटे सुजोग दबा एठी गोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेमा एबे एबे आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना अनुसार भारत सरकार किछि मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर आरंभ करिवे ताकू भी आमे किमती ओडिसा रे बांधी के रखिबा तार माध्यम रे तार जो कंचा माल उपलब्ध करिवार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रे दायित्व एटा निश्चित भाबे आमे आम राज्य पई बड़ उपयोगी हेबो एटा मोर आपनको अनुरोध एतिर आहुरी सहयोगी हेबा पई यार आनुषंगिक काम रे सहयोग बते देबा पई तार छाड़ी की जो कथा मोटी उल्लेख करतली जे ओडिसा सरकार नाप्ता क्रैकर पई बड़ दाबी रहउतला जुक्तियुक्त दाबी मु आईओसी को दायित्व दबा कारणरू आज आईओसी नीतिगत भावे सहमत होइछि 25,000 कोटी टंका व्यय करिकी चेन्नई रो सीपीसीएल हलदिया रो उपलब्ध नाप्ता सीपीसीएल रो नाप्ता पारादीप रिफाइनरी रो नाप्ता याकू उपयोग करिकी 25,000 कोटी टंकार नाप्ता क्रैकर बनिले ओडिसा रो पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम रे बोध हुए आमे भारत वर्ष एक नंबर स्थान को जाई परिबा एतिर आपनकर सहयोग आवश्यकता अछि तार छाड़ी की 15 मिलियन टन रिफाइनरी को 25 मिलियन टन रिफाइनरी को करिवार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रो लक्ष्य अछि ता दिहरे 35,000 कोटी टंकार व्यय बराद हबो ये दीटी जाक प्रकल्प नाप्ता क्रैकर आउ रिफाइनरी एक्सपेंशन खूब शीघ्र भारत सरकार द्वारा नीतिगत अनुमोदन यही आर्थिक वर्ष रे प्राप्त हबो बोर्ड रे अप्रूवल हबो या पई राज्य सरकार गोटे प्रमुख सहयोग आवश्यकता अछि फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे जहां हमें तो आपनको सुविधा नबु ही नबु किंतु गोटे मूल दायित्व आपन पाखर अछि पाखापाखि 2,500 एकर जागार आवश्यकता हबो मु निजे यार डीपीआर प्रस्तुत करबा पई दायित्व दै आईओसी को डीपीआर खूब शीघ्र प्रारंभिक तैयारी हबो मु आपन पाकु निजे जीबी आपन सामने बसी के आवश्यकता कौन अछि किमती ओडिशा सरकार सेतिर हमर पई सहयोगी हबो इडकोर भूमिका कौन रहिबो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन भूमिका रहिबो पारादीप पोर्ट रु आमे किछि जगह उपलब्ध करि परिबा कि या विषय रे आपनकर प्रमुख सहयोग आवश्यकता अछि गोटे विषय मु आपनको आगुरु भी प्रथम देखारे निवेदन करिके आसुची आज भी ताकू दोहरौछि आम राज्य रे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पई चंडीखोल अंचल रे भारत सरकार नीतिगत निष्पत्ति नैचंती आजिर एस्टिमेट तुलन रे पाखापाखि 11,000 कोटी टंका खर्च करिकी 4 मिलियन टन रो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनेमा पई Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister Captain Mishra and senior officers of the state government and IOCL. I'm happy that the IOCL and the IDCO are jointly developing a plastic park at Paradeep. The MOU between these two entities will help the industrial units coming up in Paradeep Plastic Park with special incentives for growth. My government has been providing all the required support for the petroleum and petrochemicals investments being set up by IOCL in Odisha. The plastic park at Paradeep will be very important infrastructure support to the downstream polymer industry in Odisha, being the anchor tenant of the petroleum, chemicals and petrochemical investment region at Paradeep. IOCL should play a leading role in promoting ancillary and downstream industries with the support to local entrepreneurs. I hope that the setting up of the plastic park will provide the necessary impetus to the petrochemical industries in Odisha. I wish the Paradeep Plastic Park all success and assure continuing support to Indian Oil
from the government of Odisha. Thank you. Bande Utkal Janani. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Union Minister, Steel, Petroleum and Natural Gas, Honorable Minister, Industries, Energy and MSME, Secretary, Ministry of Petroleum, Government of India, Development Commissioner, Government of Odisha, Principal Secretary, Industries Department, my colleagues from the state government, and all friends from IOCL. I take this opportunity to thank Honorable CM for his vision and keen initiative in development of this park at Paradip. Sir, Government of Odisha has already made available 120 acres of land and invested more than 75 crores in development of this park. I also take this opportunity to thank Honorable Union Minister for Steel, Petroleum and Natural Gas for facilitating this partnership of IOCL in development of this park. This partnership will definitely create a conducive ecosystem in the Paradip Plastic Park and also help in populating the park at the earliest. I also take this opportunity to thank Union Secretary, Ministry of Petroleum, Development Commissioner, Government of Odisha, Principal Secretary, Industry, Chairman of IOCL, all my senior colleagues from the state government and all senior officers of IOCL